और एक बड़ी खबर, सेबी ने आज बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। आज मार्केट रेगुलेटर ने सेकेंडरी मार्केट के लिए अज़बा जैसी सुविधा को मंजूरी दे दी है, यानी जब आपके डीमैट खाते में शेयर आएंगे तभी पैसे बैंक खाते से निकलेंगे। अदानी विवाद पर सेबी प्रमुख ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कुछ बोलना सही नहीं होगा। हालांकि सेबी ने एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ईएसजी डिस्क्लोजर के नियम सख्त कर दिए हैं। यही नहीं, म्यूचुअल फंड में भी ईएसजी की अलग अलग कैटेगरी होगी। म्यूचुअल फंड के लिए स्पॉन्सर नियमों को भी बदल दिया गया है। एमएफ के ट्रस्टीज के अधिकार और जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। We had said many months ago that we will come with an ASBA-like facility for secondary market trades. It's now going to become a manifest reality. Of course, system changes are needed, so the implementation date is a little bit away. But practically all the modalities have been ironed out. This has been once again co-created with the brokers and with the clearing corporations and the exchanges. There was a proposal that these will be the parameters. This is how we will give assurance. We went out and back tested it with a set of 10 large conglomerates. Only when it was clear, and there were some changes because of that, right? Because when the feedback comes, that when you actually implement on the ground. So with that, we now have this very powerful tool called BRSR Core. And this is what will take us into the realm of assured ESG disclosure, and therefore assured ESG ratings far ahead of any other jurisdiction on the planet. The elephant in the room is Adani Hindenburg. Now, I don't know why all of you expect that we will say anything about it, because in the first place, our standard answer is we never comment on entity-specific matters. On top of that, the matter is before the Supreme Court. We never comment on sub judice matters. So there is absolutely no question of our commenting on that.